Assalamu alaikum ji. I'm clinical psychologist Komal Aaqib Sheikh, and I'm going to be focusing on emotional intelligence and its impact on social well-being and social interactions. So I came up with this topic because I thought that it's really important for us to manage our emotions. And people these days, they don't know how to manage their emotions, and they don't know how to be socially relevant with other people. So, as for example, you would see when someone with a smile comes across you, right? You would think that they're approachable. On the other hand, when someone who is going to be frowning or would make some negative expressions or some expressions which are not conducive to the environment, you'll feel that they're not approachable and you'll start avoiding those people. So it's rightly said कि हम उनसे ही मुलाकात करते हैं, उनसे ही ज़्यादा मिलते हैं, उनसे ही बात करते हैं जो कि हमें अप्रोचेबल लगते हैं, जो कि हमें फ्रेंडली लगते हैं. And how do we know that they are friendly? The biggest cue in emotional intelligence to gauge friendliness is a smile, is an environment which shows that it's safe for one person to talk or express their feelings. So, हम किसी को अप्रोच तभी करते हैं जब हमें लगता है the other person is safe for us or we can connect with that other person. That's the slightest of the cue. The other thing is that कि काफ़ी लोग आप देखेंगे जो कहते हैं कि जी we come across as friendly people, we come across as snobbish people, we come across as people who are negative. It all depends on the kind of body language that you're exhibiting, the kind of vibes that you're exhibiting. एंड द वाइफ्स वो फिर आपका इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और देखती हैं. सो in the olden ages, in the olden days, a lot of emphasis had been put on intelligence, on how do we perform well in school, how do we perform well in our career. But nowadays, a lot much emphasis has been started being put on the emotional intelligence. Emotional intelligence क्या होती है और इतना ज़्यादा क्यों इसका हवा बन गया? Emotional intelligence is your ability to manage your own emotions and the emotions of the people around you, so that you know how to behave, so that you know how to be composed, so that you know how to be resilient, so that you know how to live your life in a proper environment, and you know how to improve the quality of your life. So emotional intelligence के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो अपनी अवेयरनेस है, अपनी इमोशंस की अवेयरनेस है. वो अवेयरनेस है कि हम कब क्या करते हैं, हम कब क्या फील करते हैं, क्या हम जो फील करते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो कैसे कर पाते हैं. सो व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, आई पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस on the cues, on the triggers. So you get to know about your emotions via your triggers. आपको पता चलता है कौन से आपके डिफिकल्ट इमोशंस हैं जब आप देखते हो आप किस पे ट्रिगर्ड हो रहे हो. अगर आपको पता ही नहीं किस पे ट्रिगर्ड हो रहे हो तो यू वुडंट नो कि भाई आपको कहाँ पे इमोशनल डिफिकल्टी है आपकी. यू वुड सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग बिंज ईटिंग. यू वुड सी अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लैशिंग आउट एट द रॉन्ग पीपल. ये जो कहना है ना कि जो अपने होते हैं, जो प्यारे अपने होते हैं, जिनसे ज़्यादा फ्रैंकनेस होती है उन पर गुस्सा निकलता है, या जिनसे ज़्यादा प्यार होते हैं उनसे गुस्सा निकलता है. व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज़? It's emotional dysfunctionality. It's not something that you should appreciate in one person. It's the biggest criteria that the other person is not emotionally regulated, that the person is not emotionally stable. क्योंकि देखिए जो emotionally stable है, that person exactly knows when to feel, what to feel, and when to act and what to act. जो emotionally resilient लोग होते हैं वो respond करते हैं, वो react नहीं करते, वो lash out नहीं करते, वो उनके वर्ड्स बैकफायर नहीं करते, उनका इस तरह से नहीं होता कि उनका कंट्रोल नहीं होता अपने खाने पीने पे, उनका इस तरह से नहीं होता कि वो एक दफ़ा उठ के एक चीज़ बहुत सारी कर लेंगे, एक दफ़ा उठ के नहीं करेंगे. दे आर नॉट अनप्रिडिक्टेबल इन देयर बिहेवियर्स. पीपल आर नॉट स्केयर्ड ऑफ देम. तो एक छोटी सी जो चीज़ मैं देखती हूँ ना वो ये है, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यू आर अनअप्रोचेबल और वी आर स्केयर्ड ऑफ यू, that we can't open up to you. Or the moment we open up to you, we start feeling guilty about opening up to you. We start feeling guilty about approaching you about a certain topic. We have difficulty in having some crucial conversations. That's the criteria where you should know that you're not emotionally regulated. That's the criteria that you should start working on your emotional intelligence. A lot of people, on the other hand,
They work quite a lot. For them, being a workaholic is an easy way to distract them from emotional baggage. Or probably they think if they work quite a lot, that's the way they're going to be more productive. But that doesn't imply in that case scenario as well. If you're doing anything above the moderation level, if you're doing anything which is too much, that's the criteria where you feel that there should be something that you should do about your emotional stability. अब हम आते हैं हमारे इमोशंस, हमें सोशल इंटरेक्शंस पे कैसे हमें तंग करते हैं या हमें कैसे प्रमोट करते हैं. आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू इन अ बैड मूड or if you're angry and you're unable to manage that anger, you won't be able to interact nicely with other people. You will be rude with other people. You won't be able to make good decisions. You will create an environment which would come across as an unsafe environment. जब environment में hostility होती है, जब environment में safety नहीं होती, तो लोग connect नहीं कर पाते. और जब लोग connect नहीं कर पाते और safe नहीं महसूस कर पाते, वो ओपन अप नहीं कर पाते. और जब लोग ओपन अप नहीं कर पाते तो ऑथेंटिक सेल्फ कहाँ पे होगी, लर्निंग कहाँ पे होगी, हैप्पीनेस कहाँ पे होगी, वेल बीइंग कहाँ पे होगी. सो टू प्रमोट वेल बीइंग, टू प्रमोट हैप्पीनेस or to promote contentment. So happiness might be an overly hyped word. I would like to use the word of contentment. To promote contentment, it's a good idea to know about your emotions, to know about your cues, to know how the emotions of other people they affect us, to know that how your emotions affect other people. जो माँ बाप अच्छे इमोशनल रेगुलेटेड नहीं होते, उनके बच्चे भी इमोशनली रेगुलेटेड नहीं होते. काफ़ी बच्चों में आप देखेंगे they are unable to express their feelings in a proper manner because they've seen their parents not express their feelings in an appropriate manner. So the first thing that you should know in emotional intelligence is the awareness. Get to know about your own emotions, get to know about your cues, get to know about your triggers. Then if you get to know about those things, second thing that you need to know is about the emotional states of other people, how to identify what other people are feeling and how to respond accordingly. आपको पता है कोई बुरे मूड में उसको जाके आप कह रहे हो, oh, let's make a fun plan. No, it's not appropriate. It doesn't look nice, right? Or for example, someone's crying and you're laughing. Do you think that's appropriate? No, that's not appropriate. So you should know how to behave with other people as well, which is emotionally right way or an emotionally regulated way. Once you know how to identify your emotions and other people's emotions, how to regulate your emotions and other people's emotions, then you would be able to imply that knowledge into your social interactions. और जब भी आप social interactions पे करेंगे, जिसको हम कहते हैं being emotionally smart और being emotionally resilient, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ की क्वालिटी मुख्तलिफ हो जाएगी. Now the other thing that I would like to focus right now would be the expression of emotions. A lot of people, they are scared of expressing their emotions, mostly because they don't know how to express it, mostly because they haven't seen in anyone who isn't good at expression. Thirdly, I think a lot of people who express, they feel that they will be vulnerable, or the idea of vulnerability is associated with expression of emotions. So get over with that. It's a good idea कि आप expression शुरू करें. आप बताएं. अगर बताने में लोगों को डर लगता है तो आप कोशिश करें, आप जर्नलिंग करना शुरू कर दें. आप अपने आप को बताएं कि आप कब क्या क्या महसूस कर रहे हैं. Another thing is that कि जब आप अपनी वर्क एनवायरनमेंट या घरेलू एनवायरनमेंट या किसी तरह की एनवायरनमेंट में होते हैं, जब भी आपके वर्क रिलेटेड या आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आप देखें फलां बंदे को देख के what emotion I felt. Did I feel happy? Did I feel anxious? Did I feel negative? Did I feel positive? What did I feel? That's going to make you understand कि हम क्या फील करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या बिहेवियर्स अपनाते हैं. For example, there's one person XYZ. The moment I see that person, I feel anxious. Just because I feel anxious, that means I would avoid that person. My interaction with that person would be very limited. On the other hand, there's another person जिसको मैं मुलाकात करके, जिससे मिल के, the first emotion that arises in me is of happiness or is of joy. तो
तो मैं उस इंसान से ज़्यादा मिलूँ, ठीक है, उस इंसान से ज़्यादा मैं बात करूँ, उस इंसान से ज़्यादा मैं कनेक्ट करूँगी और ज़्यादा फ्रीली बात करूँगी, जिसको आई थिंक हम लोग कहते हैं बीइंग ईजी गोइंग। सो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं जो कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती हैं, जो कि आगे जाके हमारे सोशल इंटरेक्शंस को डिटरमिन करती हैं। नाउ वी गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन पेरेंटिंग और इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस का क्या ताल्लुक है। अगर आप इमोशनली रेगुलेटेड हैं तभी आपके बच्चे इमोशनली रेगुलेटेड होंगे। किड्स, your children learn the most from you. You are your role models of your children. They're going to observe you. And observational learning, it does wonders. आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। जब आपका बच्चा सीख रहा है कि आप हर चीज़ पे पैनिक करें, वो भी पैनिक करेंगे। जब आपका बच्चा सीख रहा है कि आप हर चीज़ पे लैश आउट कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली they'll start lashing out as well. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम खुद सब कुछ कर लें, खुद इमोशनली डिसरेगुलेटेड हों और बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं। You think that's possible? That's not possible. So your kids are going to be your mini byproducts. They're going to see you how you manage things, and you are their biggest teachers. The biggest learning of the kids that take place in the houses, in the homes. हमें लगता है स्कूल में मैक्सिमम लर्निंग होती है, नहीं, घर पे ज़्यादा लर्निंग। आपको देखते हैं, वो देखते हैं आप किस तरह लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। काफ़ी लोग मैंने देखे, पेरेंट्स दे कम अप टू मी एंड दे कंप्लेन कि आवर किड्स, आवर चिल्ड्रन, दे आर नॉट बिहेविंग एप्रोप्रिएटली विद द डोमेस्टिक स्टाफ। तो ये जब बात कर रहे होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ कि कहीं ना कहीं माँ बाप ने किसी वक्त डोमेस्टिक स्टाफ से शायद अच्छी तरह बात नहीं की होगी, इसीलिए उनके बच्चे अच्छी तरह बात नहीं कर रहे। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अनदर थिंग, इमोशंस एंड जजमेंट्स। Your emotions, they make you judge people. अगर आप खुद इमोशनली कंपोज नहीं है, मैनेज नहीं है, तो आप इजीली लोगों को जज कर लेते हो। और जब लोगों को जज करते हो, ठीक है, डेफिनेटली यू डोंट एक्सूड द वाइब्स ऑफ बीइंग एन इजी गोइंग पर्सन एंड पीपल आर हेजिटेंट ऑफ इंटरैक्टिंग विद यू, बिकॉज नो वन लाइक्स टू इंटरैक्ट विद समवन हु इज गोइंग टू ऑलवेज पुट देम अंडर स्क्रूटिनी। सो दीज थिंग्स दे डू मैटर। अपनी इमोशनल हेल्थ को देखें, अपने आप से पूछा करें कि कब मैं क्या किस वजह से महसूस कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। अपने ट्रिगर्स देखें, कॉजेज देखें, उस पर काम करें, उसको देखें किस तरह से आपने मैनेज करना है। और जब ये आप कर पाएंगे तब भी आप अपनी वेलबींग को बेहतर में कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Huge shout out to Voila PR and ScaryAmmi for providing me with the opportunity to do the podcast here, and thank you very much for the invite. It was a wonderful opportunity being here. Thank you.